So let us resume that this is the design for the piles. If you want to include the earthquake forces in the design of the piles, then you must include orderly combination. For example, let me right click on the this pile, and you can see it is designed for all of the load combo, right? And if you want to design it only for the gravity, which is 1.6, 1.2 plus 1.6D, and then longitudinal reinforcement is 7, which is 1%. But for the other load combination, it is greater than 1%. If you go to the summary, and this will be 2.87%, which is 20 inch square. If you take 20.3 inch square, and if you use, this is 20.3 divided by 0.8, number 8 bar, and then you must provide 25 bars to the piles, and you can go for the 26, right? But if you use only design it for the gravity, it will be 7.6 divided by 0.8, and you need only 10 bars for the safely transferring only the gravity loads, right? So it depends upon the designer, because you can see that there is no much variation in the reinforcement after the 1/3, because you can see it is decreasing, and it is almost 1% after the, it is not the same for the piles, just like in the columns. This is greater, this is 20, this is 17, 13, and now you can see this is constant 1%, right? Similar for the other column, it will give you the same, it will be greater at the top, because the load concentration at the junction with the raft is very right. So this is the overall procedure to design the piles. So if we design the pile for the earthquake forces, if you want your piles to be designed for the earthquake, then for example, if there is a fault passing through the plot, then you must design your pile for the earthquake force. But if there is no fault, or the area in which there is no significant earthquake in the past, so you can design your piles only for the gravity loads, because the you will be thinking that there, if the earthquake occurs, so there is unbalanced moments coming to the structure, but the unbalanced moments will be taken by the raft and the frame structure, and you have designed the piles for the gravity loads. So right, so we'll do it for the both cases, and we will design it for the so there is punching, so you will use 42 inches raft, right, to control the same as previously designed, right? So the previous design of the raft will be the same, right, which we have designed the previous raft, their reinforcement, their thicknesses, and their different layers will be the same. The only addition will be these number of piles in the piles reinforcement, right? So this is the design, and if the it is only for the gravity, so it is designing for only 1%, and the area of the steel is AS is equal to 7.6 square, right? So the number of bars you need is number 8. If you use, for example, number 6 bar, right, if you use number 6 bar, let us use number 8 bar for this same cases, and it is 7.6 divided by 0.8, so we will need 10 bars, right? So we will use 10 number 8 bars, right? And if earthquake forces included, then AS is equal to 21
This is the maximum from all of the piles, 21 inch square. So the number of piles required for this will be 21 divided by area of number 8 bar, and it is 26. So you will provide 27, or you may go for the 27 bars as well. So you will provide 27 bars. You can provide it is circular, you can adjust it with the draftman. So you will use 27. Let me round it. So we will use 28 bars, 28 number 8 bars. Right. So this is the flexure design of the piles. So now let us go to the shear. You can see the shear demand is very less. This is because of the confinement all around the piles of the soil. Because the soil is all around the pile, so there is no pressures or demand on this piles in the lateral direction. Right, so it says the shear rebar design is in the major axis, it is 0, but in the minor axis, it may asking some of the reinforcement is equal to 0.3 inch square per foot. So let us check at the top. So it is 0.3 inch square per foot. So at the, let us check at the bottom as well. So at the bottom there is no, because the shear reinforcement, if it is required, will be in the 1/3 length of the pile, which you have seen that it is asking 0.3 inch square per foot. But if I go down beyond the 1/3 length, so it is 0. It is asking 0 reinforcement, shear reinforcement, right? So the shear reinforcement is 0.3 inch square per foot. And you have to provide the, this is shear is equal to 0.3 inch square per foot. So we will be using number 3 bar, right? So if you use number 3 bar, its area is 0.11 and divided by 0.3. And if you multiply this, so will be 4.4, which is very less. So there will be conjunction with the concrete. So we'll move towards number 4 bar, and the area of number 4 bar it is 0.2. So 8 in center to center. So we'll be using number 4 bar at the rate 8 inches center to center. This is the shear reinforcement for the piles. What I have explained, that the shear reinforcement is asking 0 beyond the 1/3 length, means after, if you take 15 feet length, that it is total height, total depth of the pile is 40 feet. And if you take its 1/3, which is almost 13 feet, you will take 15 feet. So after 15 feet, so it's asking 0 shear reinforcement. So you can decrease it for the economy purpose, and you can also decrease the number of longitudinal bars as well beyond the 1/3 length. For example, if you are designing your structure for the earthquake forces and you have to provide 28 bars at the top, so you can change this reinforcement to 10 bars, because it is asking reinforcement at the top, it is 21 inch square, and after 1/3 length, it is 1%, which is 10 bars. So if you're designing your structure for the earthquake forces, so you must provide this up to 15 feet length, which is the 1/3 length, and after that, you must provide 1%, which is 10 number 8 bars. After this length, you must provide 10 number 8 bars beyond the 1/3 length. So this is how you achieve the economy in the piles, right? So that you have to provide more reinforcement in the 1/3 length, and after that you can decrease the number of bars, right? So you can also decrease the shear if it is 8 inches.
but I will recommend not to decrease this spacing from 18. This is the actually this is the maximum limit in case of the uh, piles, or you can say the columns, that the if you increase the spacing from 8 inches to 10 inches or 12 inches, so there might be a possibility for the cracking of the concrete, right? So there will be a less confinement of the concrete. So you should carry on this from the top to the bottom of the piles, although you can decrease it to 12 inches or 16 inches because there is no need in the as per the software. Right, so this was the whole story about the pile design and the reinforcement of the pile. How do you make it economize? What are its pattern, bending moments, and you can decrease the number of piles. If you're designing for gravity, for earthquake forces, what are different factors you have to go, and the raft design will be the same, which you have same design which you have designed previously in the session 7. There will be no change in the reinforcement in the thickness, and the punching shell will be okay, right? So this was the whole story about the modeling and design of the piles. And in next session, we will take another case study. If you do not want to provide a raft, and if you go only for the piles, so what is the procedure for that, right? So this is the whole story. If you have any questions, you can ask. You कोई question नहीं? Or before going to the question, you can also want to satisfy yourself or want to cross check in the safe. You can also export that into the safe. You can check the punching check, which is I already explained to you that I have done this analysis using 36 inches. But if you provide 2 inches raft, so it will be okay for the punching, and the raft design will be the same as we provided the reinforcement in the previous session. You can see the pattern, which is same in the previous case. You can see this is the bottom, the one direction, direction 2. Right? So now, in question, कोई question है तो आप पूछ सकते हैं. सर मेरा क्वेश्चन ये है जी, सर बाज़ औक़ात डिज़ाइनर जो है वो सोलिंग डिज़ाइन करते हैं ना, बाज़ ड्राइंग में हमने देखा है सर वो सोलिंग का कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? किस चीज का कंसेप्ट है जी? सर मेरा मतलब ये है कि जो सोलिंग सोलिंग है जिसमें मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो जो खाका वगैरह होते हैं ना, जी जी. सोलिंग उसका वो मतलब वो किस तरह डिज़ाइन होता है? बाज़ डिज़ाइनर वो जो है ड्राइंग में वो डिज़ाइन करते हैं बाज़ औक़ात वो प्रोजेक्ट के लिए, फाइल्स बाज़ में डिज़ाइन डिजाइन वो कर, फाइल्स में करते क्या करते? नहीं फाइल की बात नहीं कर सर, कल वाली क्वेश्चन है राप में बाज़ औक़ात सर राप के अगर थिकनेस वो डिक्रीज करना चाहता है तो नीचे वो पहले सोलिंग करना चाहता है। अच्छा, कंसोलिंग की बात कर रहे हैं आप? वो एक्चुअली आपके जी जी पास नीचे कंपेक्शन के लिए उसको डिजाइन किया जाता है कि सॉइल की कैपेसिटी अच्छी के आपके पास जी जी अचीव हो जाए। उसकी राफ्ट की डिजाइन के साथ कोई कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी काफी खराब है और आप उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा, तो आप उसको रिप्लेस करना चाहे तो आप उसको, जिसको श्रिंगल कहते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स उसमें होते हैं, तो उसको वो प्रोवाइड करके एक्टिवेशन करके वो सॉइल निकाल के उसको रिप्लेस कर देते हैं विद श्रिंगल विद बोल्डर्स। उससे रिप्लेस किया जाता है जिससे उसकी कैपेसिटी काफी अच्छी हो जाती है। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके सर ठीक है, मेरा सर मकसद ये था अगर वो सोलिंग किया जाए तो फिर राप का डिज़ाइन मतलब थोड़ा रिइंफोर्समेंट भी मतलब कम देना पड़ेगा वगैरह, इस पे कुछ असर होगा इसका? क्योंकि देखिए, रेनफोर्समेंट की जो आपके पास उस पर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आल दो आप फॉर एग्जांपल एक सॉइल है उसमें आपके पास बेरिंग कैपेसिटी कम है, आपने उस कंसोलिंग की तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आप फॉर एग्जांपल उस पे पहले आप 10 स्टोरी खड़े कर सकते हो, उसके बाद आप 12 स्टोरी भी खड़े कर सकते हो क्योंकि आपकी उसने बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी।
ठीक है, लेकिन डिमांड तो आपके पास सेम अगर रेनफोर्समेंट आपके पास सेम आएगी। रेनफोर्समेंट कम ज्यादा तब होगी जब आप जो राफ्ट है उसकी थिकनेस कम ज्यादा करें। जो इफेक्टिव डेप्थ है ना, आपने जो इक्वेशंस पढ़े होंगे बीएससी में एमएससी लेवल में, तो आपके पास जो 5 mn है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। आपके पास डी ज्यादा होगा तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, कैपेसिटी ज्यादा होगी तो आपके पास रेनफोर्समेंट कम होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। Is there any question? सर और ये दूसरे जो पाइल नहीं होते सर, जो एक्सकेवेशन से पहले एक बिल्डिंग के साइड पे जो होते हैं सर, ताकि वो बिल्डिंग न गिर जाए, जी जी, उसका डिजाइन किस तरह होता है? उसके डिजाइन भी आपके पास इसी टैब में आपके पास होता है। उसको उसके दो किस्म के फाइल्स होते हैं। एक आपके पास सोल्जर फाइल्स होते हैं जिसमें आपके पास एंकर आप प्रोवाइड करते हैं। मेरा मतलब ये, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये एक प्लॉट है और आप इसके इर्द गिर्द आपके पास ये आपके पास यहाँ पे तो रोड है, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, यहाँ पे आपके पास है, और यहाँ और आप 3 बेसमेंट्स करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रोटेक्शन पाइल्स देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोटेक्शन पाइल्स या इस तरह देंगे। तो उसके आपके पास डिफरेंट टाइप्स है। एक आपके पास उसको सोल्जर पाइल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रॉस सेक्शन शो कर दूँ तो ये आपके पास पाइल है और इसको यहाँ पे एंकर किया जाता है, और इसको यहाँ से केबल्स के जरिए यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे किसी और चीज बिल्डिंग है और यहाँ पे इसको एंकर करके इसको फिक्स किया जाता है। तो ये इसको यहाँ पे फोर्स लगा के, तो ये इस तरह आपके पास जो सॉइल प्रेशर है उसको रेजिस्ट कर लेता है और ये आपके पास सॉइल को गिराने से बचा लेता है। दिस इज कॉल्ड सोल्जर पाइल। दूसरा आपके पास प्रोटेक्शन पाइल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लॉट है और आप इसमें प्रोटेक्शन पाइल्स देना चाहते हैं, उसको टेंशन पाइल्स कहते हैं। ये सारे प्रोटेक्शन पाइल्स है, लेकिन इसको सोल्जर पाइल्स कहते हैं, और ये आपके पास टेंशन पाइल्स है। ये आप इस तरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप इसमें इंकरेज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी किसी और बिल्डिंग का बेसमेंट है और दूसरी साइड पे भी बेसमेंट है, तो आप इंकरेज जमीन में किस तरह करेंगे? तो इस केस में आप प्रोटेक्शन पाइल्स देंगे, विच इज आल्सो दी कॉल्ड टेंशन पाइल्स। और इसमें आप यहाँ पे ब्रेसिंग देते हैं, यहाँ पे एक स्टील ब्रेसिंग दे देते हैं, यहाँ पे स्टील ब्रेसिंग दे देते हैं, कॉर्नर्स पे स्टील ब्रेसिंग दे देते हैं। ठीक है, और इसको इस हाइट पे दे देते हैं ताकि इसमें जो नीचे कंक्रीटिंग हो सके, इसमें एक स्टोरी 2 स्टोरी बन सके। जब स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी तो आप ये एंकरेज, ये ब्रेसिंग आप ये हटाते जाएंगे और ये पाइल्स रह जाएंगे और आपकी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। ये आप ईटेब में भी कर सकते हैं। ईटेब में इसकी डिजाइन हमने प्रीवियसली, हमारा एक प्रोजेक्ट है उसको, इसकी डिजाइनिंग हमने ईटेब में ही की। ओके सर, समझ आया, थैंक यू। ठीक। Right, so is there is no other questions? So you can practice this design and modeling of the piles, but remember that it will take a lot of time. So if you keep the segment length of the pile large, so it will take less time. But if you increase the segment, decrease the segment length, so it will take a lot of time, and the file will be very heavy, and you have to work with patience, right? So I will share all of these documents and models with you, and see you tomorrow, inshallah, with the design of files if you provide file capes, and then the last session will be the drafting of the all of the footing which we have designed in this course, right? So see you tomorrow, inshallah. So if you have any question, you can write it down and you can ask me tomorrow. Okay sir, thank you.